जबकि उसके लिए ऐसा होना चाहिए ट्री का स्ट्रक्चर तो बाहर को रखो, और अगर कहीं पे भी डैमेज होना शुरू होता है तो उसमें पेंट, वाइट पेंट लगवाए. And I guess another thing that is raised sometimes is the risk of snow damage to the trees. With more of a renewal style of pruning, but again for us we really like to see these pendant branches hanging down, and when you look at the conifer trees in the forest, they have hanging down branches and can tolerate with the snow load. So maybe well, in our view these type of pendant branches are really good for producing a lot of fruit and good quality fruit. कहते हैं कि जिस तरह से हमारा एरिया स्नो बर्फ़ वाला है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो हमारे ट्रीज़ की जो ब्रांचेज है नीचे की तरफ से होनी चाहिए, उसका एंगल वाइड होना चाहिए, और उससे क्या होता है बर्फ़ के कारण से आपकी टहनियाँ भी नहीं टूटती है. दूसरा वहाँ स्पर्म डेवलपमेंट जो ज़्यादा होता है जिससे फल ज़्यादा लगता है. तो ये जिस तरह इन्होंने डाउन किया है तो ये सही है यार की पौधे. So this tree, there's been some tying down of these branches, and it's been done very well, and we are seeing the development of a lot of fruiting spurs on these branches. So this is really good. This is the way to go. हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है स्पर फॉर्मेशन अच्छी बनी हुई है, पाया गया था. इसका भी है कि किसान ने यहाँ जो काम किया है वो बेहतर है. So I guess there's a question to be answered, or a decision to be made about the structural form of this tree. At the moment it has, how many permanent upright scaffold branches? 1, 2, 3, 4 maybe, and they are quite close together. So this one, which is really like the main leader, the dominant leader, and this branch here, and we have to answer the question, are we going to keep all of those? Or there's really 5 of them if we count this one here. Is there room for 5 permanent upright branches so close together? Yes or no is, I guess, the question. And the danger is that if we have too many strong branches together, then they will not develop fruiting wood. They will become bare over time. ये कह रहे हैं कि इसमें 5 जो है सीधे ऊपर जो है स्कैफोल्ड ब्रांचेज जो है उगी हुई है. अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी इसमें ब्रांचेज रखनी है, क्योंकि ये कंपीट कर रही है आपस में. तो अब यदि हम इनको ये कह रहे हैं कि यदि सीधी रखते हैं तो इसमें बीमे नहीं बनेंगे, ये फिर वही लकड़ वाली ब्रांचेज रहेंगी. तो ये डिसाइड करेंगे अपने प्रिंसिपल के हिसाब से कि भाई इनमें से कौन सी जो अपराइट ग्रोथ वाली जो ब्रांचेज है वो काटनी है और कौन सी रखनी है. Yeah. So if you're happy, I'll go ahead and make some decisions here and prune off couple of branches. Okay. So because we have a really good number of these fruitful branches, so I'm not worried that I'm going to reduce the crop by removing the branches that I do. I guess if you don't like it, you won't ask me to come back. ये कह रहे हैं कि भाई इसमें तो देखो बहुत अच्छे वो बीमे बने हुए हैं. मैं प्रोडक्शन को रिड्यूस तो नहीं करना चाहता इनको काट के. अब ये इधर को चले गए हैं कि देखो नहीं तो मेरे को दोबारा बुलाएंगे नहीं, मैं इसको काट देता हूँ तो आप बुलाएंगे नहीं मुझे दोबारा. अब इन्होंने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी कहनी है. So what I'm going to do is to remove this one back down to here. So I'll keep this fruitful branch here. I'm deciding that if I leave this one here, it's going to prevent the development of more fruiting wood on the main leader here. अब ये कह रहे हैं कि यदि मैं नीचे से काटता हूँ
मतलब काट ही दिया अब। तो अब जाके जो है जो मेन जो है ना जी, इसमें जो है बीमे बनने शुरू हो जाएंगे। यदि ऊपर से रखते तो इसमें बीमे नहीं बनेंगे। हाँ ठीक। So there's some good grafting wood there. So I understand there is a shortage of good quality grafting wood of high colour spare red delicious. So there could be some good grafting wood there. And one more that I could either use the loppers or the saw. So I'll use the saw. Trying not to walk on the nursery here. So this is a lot. So this branch here is growing in the way here. So again, I'm going to keep this and remove this one here. अब देखो ये इसको नीचे से भी काट सकते थे क्योंकि इसमें एक झुकी ब्रांच पहले है जिसमें बीमे बने हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन में फर्क ना पड़े इस साल। इसलिए इन्होंने जो स्ट्रेटन थी, लीडर बन रहा था, कम्पीट कर रहा था मैं लीडर के साथ, वो काट के फेंक दी। इस बीच में एक बात आपको सुनाऊं, हम यहाँ कट एंड पे देखो अभी ये पेस्ट लगा देंगे। हम कब लगाते हैं? जब बगीचा सारा काट कर फारिग होता है, तब इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और फंगस जो तब तक अटैक कर चुका, उसके बाद फिर बाजार से जेके पेंट लगाए और So yeah, if there are any questions or if anyone wants to tell me to leave now, that's okay. Any feedback? कोई प्रश्न है किसी का इस पर? चलो काट, प्लीज कैरी ऑन। Okay. So so we do have an option with this branch here, which is a good branch. We could use a spacer or tie it, and we don't have to do it now, but we could push this branch out a little bit more like this to make better use of the space and to get better development of fruiting wood on this branch, and on our main leader. अब ये कह रहे हैं कि यदि इसको काट लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी टहनी दोबारा बननी नहीं इनसे। फिर इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है इसको बैंड देना है ताकि इसके लिए जो है इसमें भी स्पेस परे बना रहे, इसमें बीमे बन जाए और इसमें भी फ्रूटिंग बीमे आ जाएं और आ भी जाएंगे जैसे इनमें आए होंगे। तो उदाहरण सामने चलो। Okay. Can you pass me the loppers, please? Okay, so remember that I said we're trying to do the most important cuts first. So I haven't done any detailed pruning yet. So I need to finish what we would call the structural pruning. And there's two things or two branches that we have to make a decision about, and I'm not a little bit in two minds what to do here, but this is our leader. This branch is becoming fairly dominant, it's quite strong, and so is that one. Now, if I'm in New Zealand, what I would do without too much hesitation would be to remove that one and to remove that one, because they're becoming too big. And really I only want wood that is like this, fruitful, pendant, and for me these are already too big, but they could be tied down maybe, but the question is that a good use of my time, and do I need to, or do I have enough fruiting wood that I can already carry a full crop on this tree? ये कह रहे हैं कि भाई अब ये 3 घंटा और हो गई इसमें, लीडर के साथ compete कर रही है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये एक ऑप्शन तो इनके पास ये है कि इसको बेंड करेंगे और दूसरा ऑप्शन है इनको निकाल देंगे। एक दिखाई इन्होंने इधर वाली ब्रांच, एक दिखाई है सामने वाली ब्रांच। तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें इतने बीमे हैं इस पेड़ में कि हम इसको सोच सकते हैं इनको रिमूव करें।
So again, I have to make a decision, and time is money. But yeah, at least I'm trying to explain the thinking process here. So I'm going to remove them. Yeah. अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको भी निकाल ही दें, बेहतर रहेगा कि इनको निकाल के ही फायदा होगा, तो ये इसको काट रहे हैं. So I try and cut fairly close to the trunk, but at a bevel cut, so I will get some regrowth from that cut. बेवल कट लगाया है इन्होंने, जो हम नहीं लगाते थे ना, इन्होंने लगाया ताकि यहाँ पर नेक्स्ट ईयर जो है ब्रांचेज निकले जिसमें बीमे बने, इसलिए इन्होंने इसको तिरछा कट लगा दिया है. I have a query. Excuse me. Yeah. Do we can use anything over there where you make a cut? We can use a paste or something else, kind of something. Yes. Or we can leave it open. So every cut that I've made, I will use the paste. Well, one more cut, this one here, and then after that, they're too small and they're small enough they don't need to be pasted. You've got to draw the line somewhere, and for us, we would say, yeah, it's about a walnut size cut. Any saw cut we would paint because it is a rougher cut, but the lopper cut, when it's nice clean cut, it'll heal better. So yeah, these cuts, yes, they have to be painted. These ones are 50-50 really. So let's see if I can fall off the ladder. So I'll take that one out as well. अभी लॉपर देखो कितना अच्छा स्मूथली काटता है और कितना बहुत आरी से कितना बेहतर है, इतना मोटा काट दिया. इसमें भी बेवल कट लगाया गया है. Okay, let's have a look here. Well, I think so. In terms of structural pruning, we've finished the bigger cuts. Now there's just some detail pruning to finish off. स्ट्रक्चरल जो कट लग रहे थे, जितनी ब्रांचेज निकालनी थी वो इन्होंने निकाल दी है. अब ये जो है इसको फर्दर अब रूटिंग पे लाने के लिए जो फर्दर जो कटिंग है इसको फिनिश करना है. इस तरह से इसको पौधे को जो है ये डेवलप करने जा रहे हैं. So sometimes in New Zealand, farmers will have experienced pruners who will just do the structural pruning. The best pruners do the structure, and then you can have the learner pruner, the inexperienced pruner can do the detailed work. ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में जो एक्सपर्ट है ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे प्लांट का, उसके बाद कोई भी अनाड़ी भी जो है वो कहीं से भी आके प्रूनिंग कर सकते हैं. Okay, so just a little bit more discussion here. In terms of, so you see here that this has been shortened back, and we see a reaction growth in terms of vegetative growth response. So as a rule, we would not shorten that back. We would rather leave it and let it develop more spurs. Because by shortening it, we're telling the tree to regrow. So we would not shorten back like that. And most of these have been shortened back, but there are some that haven't. Well, like, where is it? So this one here, not shortened back, and we will probably have better fruit buds on those terminal shoots there. पिछले साल हमने इसमें कट लगाया था. ये कह रहे हैं कि भी इसमें जो कट लगाया है इसने वेजिटेटिव ग्रोथ आगे बढ़ा दी है. जो हमारा मकसद था इसको शॉर्ट करने का वो नहीं हुआ. तो यहाँ एक ब्रांच दिखा रहे हैं, इसमें कट नहीं लगा था बाई चांस लास्ट ईयर, तो इसलिए ये जो है अच्छा फ्रूटिंग
ब्रांच बन गया है। I'm not saying that we never shorten back, but we wait to see when the vigor has gone away, and that we've got, if we have too many fruit buds developed, which might take another 2 or 3 years, then we might shorten back. But only after that has happened and not before. If we do it before, we're just going to create vigor. It's not helpful for us. इनका कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं है कि हमने एक प्रिंसिपल ही बना दिया कि इसको शॉर्टन करना ही है। जब तक हमें ज़रूरत है इसको बढ़ाना है, जब तक इसमें जो है बीमे नहीं तैयार हुए, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो इसको शॉर्टन करेंगे। वो तो नेचुरली हेड बैक नहीं करेंगे उसका। Okay, so any questions so far? That one thing. Yeah. We will be licking this plant. Yep. Will we click this here? Yeah, it's time to talk Should we about. or not? Yeah, we won't click it if we're in New Zealand. Okay. We might click it if we're in Holland or What's the Italy. reason? We don't. Yeah, we don't bother with clicking. We don't see the point, really. We tend to say in or out. We try and keep life simple. You know, we're Kiwis. Here we have a thing that if we don't click this thing, then basically the thing is stopped. The growth stops basically. Right. Because Yeah. we are like spun. Well, okay, I don't agree with that. Well, for us, it's the terminal bud is the strongest bud on the shoot, and it is the most likely to set fruit. So if we cut it off, what we've now said is to these buds back to where we've cut, you grow. We don't need to click any of the branches. I don't think so. Well, I'll prune it and you tell me what you think. But yes, as a rule, no, we don't click cut. करण दत्ता का प्रश्न था कि इसको पीछे काटना है, क्लिक करना है। ये कह रहे थे कि ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जो टर्मिनल बड होती है ये फ्रूटिंग जो फ्रूटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग होती है। तो किसी देश में ये हेड बैक होता होगा, और यहाँ हॉलैंड, क्या बोल रहे थे, हॉलैंड बोला, हॉलैंड में होता है ये लोग। हाँ, और ये जो न्यूजीलैंड वाले हैं ये इसको नहीं मानते। यूरोप में सब क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे ये झुक गई ना, ये सारी टहनी निकल गई। With the water shoots है ना ये। How will we manage these water shoots now? Yep. Some are Okay. very strong. Yes. Okay. So how to manage the water shoots? Well, again, for us, we see that pruning can be done more than once. We don't do all of our pruning in the winter time because winter pruning cuts do create a vegetative response. Yeah. So actually we have an open mind to doing some summer pruning. And for example, the sort of shoots that would be great if they would be removed are these quite strong, upright 1-year-old shoots. And for us and our better growers, they would go through the orchard and remove those in say a month or 2 months before harvest. So that is helping to reduce the vigor. It's getting light on the fruit for better colour, and it's removing growth like this that is useless and it's creating shade and creating. अब ये कह रहे हैं कि ये करण दत्ता का प्रश्न था कि वाटर शूट को कैसे मैनेज करें। ये कह रहे हैं कि ये जो वाटर शूट ये दिख रहे हैं, यदि हम इनको हार्वेस्टिंग से 2 महीने पहले रिमूव कर दे तो अच्छी शेड जाती, मार्स होना भी नहीं आता। हमारे यहाँ ज़्यादा ही होती, वही प्रॉब्लम रहती है, अंदर शेड नहीं जाती और जो है धूप अंदर तक लगती। जो इसमें फ्रूट लगा हुआ था वो बेटर क्वालिटी का होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि समर प्रूनिंग के लिए आप हेजिटेट ना करें, कोई भी बागवान समर में ज़रूर बगीचे में जाएं, देखें। कितने दूर से काटना है ये? अभी अभी साल
ये तो मना कर रहे हैं समर बोलेंगे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा अभी आ जाएंगे इस पर अभी फिर दौड़ेंगे अभी इनको ऐसे ही लगेंगे करेंगे अभी दिखाएंगे। So yeah, and another thing that we will do just after fruit set, we might come through and say we can see that this here's a strong shoot already, and say a month after bloom it might already be this size, and we might just rip it out. Just quickly, so just take those strong ones out. I know with We'll just rip it out. It's quicker. But that's an option. You don't have to do that. But it is true that if a it's true that if you do a shortening back cut in the summertime, so look, let's choose a shoot here. I'll say this one. If that's shortened back like this in June, then it might produce a fruit bud there. Yeah. So that has a place. That is an option. But I guess the other question we have to ask is, do we have enough fruit buds on this tree to carry a full crop? What do you think? Shall we do let's do a vote here. If you think, so you've got three options. One is if this tree has not got enough spurs to carry a full crop. Put your hand up now. ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पेड़ में वोट डालने वाला डेमोक्रेसी आ गई यहाँ पर कि इस पेड़ में फ्रूटिंग बर्ड्स पर्याप्त मात्रा में है, तो आप जो यस कहते हैं कि हाँ ठीक है तो हाथ खड़ा करें, नो है तो नो। very less food burn. हाँ, the majority is saying that there is no enough fruit buds, enough bulbs. No, less. We have less fruit burden. Not enough fruit buds. So if you think there's not enough fruit buds, put your hand up now. हाँ, जिसको है भी इसमें फ्रूट बट पूरा नहीं है, हाथ खड़ा करें। मेजॉरिटी कहाँ जा रही है? हाँ, मेजॉरिटी। The biggest democracy in the world. Okay, so there's two more options. If you think this tree has about the right number of fruiting buds for a full crop, put your hand up now. And the last option is if it has too many buds and it's going to produce too much fruit, too many small apples. That's the third choice. Well, let's just ask. I can't see any third choice. No. अब तीसरी चॉइस ये बोल रहे हैं कि इसमें इतना फ्रूट बड है कि छोटा फ्रूट तैयार होगा, क्या कोई उससे सहमत है? Okay. So yeah, we're on the same page here, but with my pruning, I'm trying not to reduce the number of spurs, the fruiting capacity, because we're still encouraging more. But for me, I do think that we're going to have a good bloom here, and provided there's enough cross-pollination, different varieties here, and we don't put on any chemicals that are going to kill the bees, like neonicotinoids or organophosphates, because there's a lot of that goes on in India. That, you might have the flowers, but you kill the bees so you don't get the crop. But so if that's the case, yeah, my feeling would be that this tree must be close to able to carry a full crop with the spurs that we have here already. ये कह रहे हैं कि आप लोगों से सहमत है ये भी, क्योंकि इसमें फ्रूट बड जो है इतने हैं कि अच्छा क्वांटिटी से जो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके लिए दो तीन बातें कह रहे हैं कि एक तो आप इसके पॉलिनाइजर यदि अच्छा है तो आसपास में, और बीज मक्खियों को बचाएं आप, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो केमिकल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल ना करें। उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि आप लोगों से सहमत है कि भी इसमें फ्रूट बड जो है काफ़ी। Okay, all right, so now we still need to finish the job here. This is taking a long time, but I hope that's all right.
Okay, so let's look for a branch that helps describe the story. This one here. So clearly anything that's upright and unfruitful we'll remove. And so I'll get rid of that and that and that. And here this has been disrupted because it was shortened, and now what are we going to do? Probably I'll just leave it. And it's going to take another year to develop fruit buds on these two one-year-old shoots. So our rule of thumb is anything that's upright and inside the secateurs, inside this 30-degree range, we just remove as I've done. हम रूल बता रहे हैं। इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कैंची रखी, इसके इधर और इधर जो फालतू टहनी थी इन्होंने रिमूव कर दी और इसको रहने दिया। यदि हम इसको कहते हेड बैक करते फिर ये और बढ़ेगा आगे। ये पिछले साल कट लगा था, इसकी वजह से ये बढ़ गया और इस बार इसको ये काटेंगे नहीं इसको। अब ये ब्रांच इनकी क्लियर हो गई है, अब ये नेक्स्ट ब्रांच पकड़ेंगे। The other thing, if I felt that this branch was going to set too many apples, then I might thin out some more, but I don't think it's necessary. And I guess that's another thing that's worth discussing, is the approach to managing the crop. So for us, our labour cost is high, our freight cost is, all our costs are high. So we have to do everything we can to get a full crop. We would rather have this tree set 50% more apples than it can carry, or even 100% more, to be sure to get a full crop. And we are quite happy, quite prepared to spend the money to hand thin the numbers back that we can grow large red apples. So that's the way we would approach it. कम करें, इनका कहने का मतलब वैसे भी मैं कम नहीं करूँगा मैं, लेकिन बाद में जो है हैंड थिनिंग से जो है इसको अच्छा क्वालिटी फ्रूट जो है बनाने के लिए इसके जैसे लार्ज मीडियम साइज का बनाना। लार्ज स्केल में जैसे हमारे बड़े बगीचे हैं ना, वो तो हमारे तो बहुत बड़े So of course that's a judgment call that every farmer has to make, is do I want to, or am I prepared to spend money on hand thinning to get more valuable large high colour fruit? My understanding is that most farmers won't. But the other thing is that if you allow, if you have a good pollination, सर कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। ठीक ठाक। हेलो बोलो। और ये अब डिसीजन लेना है कि भी अब हम डिसाइड करेंगे। Yeah, so if we make a decision we're not going to spend the money on hand thinning, then we might prune a bit harder so that we set a crop that is not too big. But if we're not sure how good the fruit set will be, then we have to be conservative. अब सारे डिसीजन जो है रिस्क हैं सारे। ये कह रहे हैं कि हम हैंड थिनिंग नहीं कर सकते अफोर्ड, तो मैं कहते इसको और थोड़ा हार्ड करूँगा। लेकिन रिस्क ये है कि यदि हमारे पास स्थिति ऐसी नहीं बनी, ये क्रॉप फिर फेल हो गई, तो इसके बारे में जो है आगे क्या सोचना है, इसको थिन किया जाए या फिर हैंड थिन किया जाए। बाद में
So we don't like these complicated इसमें वो आएगी इसमें आगे आएगा बीमा इसमें आगे यही तो कटिंग है भाई दूर दूर हो जाओ अपने कटिंग से बचना है ना